अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर ब्यूटीफुल वीडियो। आज का है हेल्थ कास्ट एपिसोड 3। तो आज हम लोग बात करेंगे कि भाई शुगर शुगर क्यों इतना अच्छा लगता है, हाउ मच शुगर शुड वी टेक, व्हाट टाइप ऑफ शुगर शुड वी टेक, और जो है कोई अल्टरनेट है शुगर का जो शुगर के जैसा काम करता है। ये सब जो है बहुत सारी बातें करेंगे। तो इस वीडियो को जो है जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आजकल जो है सबको मालूम है कि भाई वाइट शुगर इज़ वेरी डेंजरस टू हेल्थ एंड इवन जो है बहुत सारे कंट्रीज़ के गवर्नमेंट्स भी जो है उस पर जो है टैक्स डाल रहे हैं सो दैट द कंजम्पशन ऑफ शुगर कम्स डाउन। सो हाउ एक्चुअली शुगर इज़ बैड टू हेल्थ, हाउ मच शुगर इज़ बैड टू हेल्थ, वाई डू वी क्रेव फॉर शुगर इन स्पाइट शुगर बीइंग सो बैड। सो शुगर भी जो है एक तरीके का नशा है। तो वाई शुगर इज़ सो एडिक्टिव, बाई शुगर बीइंग सो हार्मफुल, उसके बावजूद भी जो है वी क्रेव फॉर शुगर, वी क्रेव फॉर शुगरी ड्रिंक्स, वी क्रेव फॉर शुगरी डेजर्ट्स। द रीज़न क्या है? तो द मिनट वी कंज्यूम शुगर वी हैव द क्रेविंग टू हैव मोर शुगर। द रीज़न है द मिनट वी टेक शुगर डोपामिन जो है ब्रेन के अंदर एक्टिवेट हो जाता है। जैसे एक्टिवेट होता है इट्स अ प्लेजर हार्मोन, जैसे जो है डोपामिन एक्टिवेट होता है तो इट स्टार्ट्स क्रेविंग फॉर मोर। सो दैट इज द रीजन कि व्हेनेवर यू eat sugar you have that craving. The best example for that is whenever you drink a glass of sugarcane juice, you always tend or you have the craving to have the second glass. आप ट्राई कीजिए नेक्स्ट टाइम, whenever you drink one glass of sugarcane juice, the minute you finish the glass of juice you have the craving for a second glass also. The reason is sugarcane being rich in sugar, उसके बावजूद उसके साथ जो है डोपामिन इज फुली एक्टिवेटेड एंड द क्रेविंग इंक्रीजेस। तो चलिए तो बात करते हैं कि वाइट शुगर के बारे में। ये था छोटा जो है इंट्रोडक्शन, क्रेविंग क्यों होती है बोलते हैं, बट आवर टॉपिक इज शुगर। विच शुगर इज गुड? वाइट शुगर, ब्राउन शुगर, जैगरी या डेट शुगर, कोकोनट शुगर या हनी या डेट सिरप, विच शुगर इज गुड? सो सबको मालूम है कि भाई वाइट शुगर इज बैड। द रीज़न इज कि भाई जैसे ही आप वाइट शुगर लेंगे ग्लूकोज बनता है बॉडी के अंदर। द मिनट यू टेक शुगर इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। जैसे ग्लूकोज बॉडी में प्रोड्यूस होगा द मोर इंसुलिन इज प्रोड्यूस। जैसे इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा आपका बॉडी वेट बढ़ेगा। जैसे ही आपका बॉडी वेट बढ़ेगा इट इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर ऑल द मेटाबॉलिक डिजीजेस टुडे। अब मेटाबॉलिक डिजीजेस में क्या आ जाते हैं? डायबिटीज़ आ गया, हाइपरटेंशन आ गया, हाइपरलिपिडेमिया आ गया, एंड जो है अगर आप ओवरवेट हैं तो स्लीप एपनी यानी कि जो स्नोरिंग करते हैं, जो खराटे मारते हैं रात में, जिसके वजह जो वेट बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ों का रीज़न है वाइट शुगर। वाइट शुगर डायरेक्टली नहीं, बट द अमाउंट ऑफ इंसुलिन दैट इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द सर्ज और स्पाइक इन द शुगर लेवल्स। तो जो है sugar as such is not bad for health, but the quantity of sugar, the more sugar, the more glucose production, more spike of sugar in the body, more insulin is produced and the weight goes up, and then all the metabolic problems come into picture. By okay, white sugar is bad, so what should we do? We should be going for an alternate. The best alternate people think is jaggery, because jaggery का natural है, less processed है, so jaggery is very good. No, it is not like that. Jaggery has some amount of iron, magnesium and potassium, but that is not sufficient enough to say that it is an alternate for white sugar. Jaggery also has the same amount of sugar spike in the body, the same amount of glucose conversion, insulin production and weight gain, calories, everything is same for even jaggery. So jaggery is never a substitute for the sugar. अगर आप एक चम्मच शुगर यूज कर रहे हैं और एक चम्मच जैगरी यूज कर रहे हैं तो इट इज सेम, इट हैज नो हेल्थ बेनिफिट और नो सुपीरियरिटी टू वाइट शुगर। सो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर इफ यू फाइंड ए डायबिटिक पेशेंट और ए डायबिटिक फ्रेंड यूजिंग जैगरी, तो डायरेक्टली से बाबा यू आर यूजिंग वाइट शुगर इटसेल्फ। ओनली थिंग इज इट इज लेस प्रोसेस्ड एंड प्लांट बेस्ड, सो वी थिंक कि भाई इट इज वेरी हेल्पफुल और वेरी न्यूट्रिशियस। इट इज नॉट लाइक दैट, बिकॉज द मिनट the sweet thing goes into the body, the pancreas doesn't understand that you have taken white sugar, jaggery or corn syrup or date syrup or coconut sugar. The pancreas cannot differentiate it. pancreas को क्या है, कुछ मीठा आया, ग्लूकोज को कन्वर्ट करो, इंसुलिन बनाओ और जो है शुगर स्पाइक को कंट्रोल करो। जैसे ही आपका इंसुलिन बनेगा आपका बॉडी वेट बढ़ेगा और जो है सारी प्रॉब्लम बीपी, शुगर, थायराइड वगैरह जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हैं। तो
pancreas, you cannot differentiate, okay, this sugar is coming from jaggery, so I will process it fast. This is coming from white sugar, this is coming from date syrup. No. Pancreas, the minute it goes inside, the pancreas has no control of the sugar, where it produces to glucose and insulin starts becoming to break down the sugar. So pancreas as such doesn't has the ability to differentiate the sugar. So can I use coconut sugar? Can I use date syrup sugar? Can I use honey? No, all are the same. Only thing is they can be in alternatives just to sweeten your taste buds, but they can never be good for diabetes. So they all have the same amount of spike of sugar in the body. So neither white sugar, brown sugar, corn syrup, dates, in fact the whole date, honey, and even jaggery, none of them are substitutes for sugar. They can be used, but again they always have a risk of spike in sugars in the body. So अब क्या करना भाई? Why? What should we do now? The only alternate or the only substitute we have is stevia, which is a plant based. It has 0 calories, 0 carbs, and there is no sugar spike when you take stevia. So the second thing is erythritol. Again erythritol में भी जो है it is 0 carbs, 0 sugar and 0 calories. The third one, which I don't think so it's available in India, but it is available in UAE. It is available in some other parts of the world, जिसका नाम है monk fruit, जिसको कहते हैं, I don't know, I have not seen it, but they say कि भाई again the sugar extract from the monk fruit is very good. It has 0 carbs, 0 calories, and it has no sugar spike. So these three are the alternate. So anyhow, even though they are the alternate for sugar, again nobody can say कि भाई with these sugars there is no spike, because again it goes into the body, and जो है body कैसे उसको respond करता है, कैसे जो है glucose, how fast the sugar is converted into glucose, and how the insulin acts. So pancreas cannot differentiate it. So overall जो है the best thing to control your sugar is to control the intake of sugar in the diet. So sugar is everywhere. Sugar is not only in the form you put from the box into the coffee, tea or juice. Sugar is in everything. Okay, by your breads, biscuits, and your chips. Because they use palm oil, they use potato. They have a lot of. They are rich in sugar. So sugar is not only the physical form of sugar. There may be a hidden source of sugar in every food item we eat. So we cannot avoid food. So at least we can avoid the extra addition of sugar. So how do we cut the craving? See, कौन सी भी चीज़ को addiction को कट करना हो तो उसको जो है थोड़े दिन दूर रखना पड़ेगा. So immediately you cannot stop. The best formula to stop the intake of sugar is reduce. See, if you are taking 10 grams of sugar, reduce 25% every week. अगर आप 25% जो है वीकली रिड्यूस करते करते शुरू करेंगे, तो आफ्टर अ मंथ यू स्टॉप यूजिंग द शुगर, एंड विद इन 10 to 14 days the taste buds will forget the craving of sugar. Once the taste buds forget the craving of sugar, your dopamine also will be sitting quietly in the body, and it will not trigger you to have more sugar. Why there is more craving of sugar when you are stressed is again a very big question. People say कि when we are stressed we tend to eat more sugar. The reason is कि again जो है stress में जो है stress hormones get activated, cortisol gets activated to balance your mood. जैसे ही cortisol activate होता है तो you tend to eat more sugary foods, more जो है spicy food, और more जो है क्या कहते हैं कोलेस्ट्रॉल रिच फूड बोलते हैं, जैसे पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह को जो है क्रेविंग करता है. उस टाइम पे जो है अगर आप कोई स्वीट या जूस लेंगे तो फिर डोपामिन एक्टिवेट हो जाएगा, प्लेजर हार्मोन्स गेट एक्टिवेटेड, एंड अगेन यू विल हैव क्रेविंग. Overall message is to cut down the sugar. It is not the quantity, to completely cut down the sugar so that the body starts reducing the craving of sugars. That is possible only when you start reducing the intake of sugar, and over a period of time from 10 to 14 days or 1 month or 2 months, the craving will definitely end. Yeah, moderate amount of sugars sometimes here and there, it's inevitable, and here and there it is acceptable, but not on a routine basis. The first thing what you can do is stop using sugar in tea or coffee. The minute you stop, because that is the thing where everybody, the first thing we do in the morning, or we take 2 to 3 times in a day. तो मैक्सिमम शुगर जो है हमारा जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, इंडियन पॉपुलेशन के लोगों में जो है चाय और कॉफ़ी से आता है. सो आई थिंक सो इफ़ यू स्टॉप
that most of the problem will get sorted out. And as such, sugar directly will not cause diabetes. It is the quantity of sugar which is causing you the production of insulin and the overweight, that is the main reason for diabetes. क्योंकि अगर आप देखते हैं कि भाई पहले जो है डायबिटीज़ 50-60 ईयर्स में आता था, अभी जो है 20 साल 25 साल में आ रहा है. अगर उन पेशेंट्स को आप देखेंगे तो दे आर मॉर्बिडली ओबीज. So when the obesity increases, when the obesity, the incidence of obesity increases, diabetes starts picking up at a very young age. So जो है इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो आपके एक फ्रेंड को ज़रूर भेजें जो ओबीस हैं, जो डायबिटीज़ हैं और जिनको लगता है कि उनका ओवरवेट है, सो दैट इट विल हेल्प देम. और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर सच कंटेंट ऑफ फूड हेल्थ एंड बकवास. तो मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक